is all around us. It cannot be seen but can be felt. Without air, there is no life itself. While air is mostly gas, it holds several tiny particles called aerosols. Some aerosols like dust and pollens are picked up when the wind blows. But air also carries soot, smoke and other particles which pollute the invisible air. Air pollution lurks all around us. It preys on everyone, not sparing the young or old. Delhi, it's a city of many worlds, many lives. One that thrives in the manicured lawns of Lutyens' Delhi, the other that seems to be stuck in purgatory. If Bijli, Pani and education are local issues, then so should be pollution, the air that Delhi breathes. When I was also a child, I learned that air has 79.8% nitrogen and oxygen and some rare gases, etc., etc. That's what we all grew up reading and talking. And today, when I hear my children or other people's children talk about air, they talk about PM, they talk about 2.5, 10, they talk about SOx, NOx, ozone, hydrocarbons, methane. These are the terms which our children are growing up, and that's because we have polluted, poisoned our air. जितने भी बड़े लोग हैं एयर प्यूरीफायर लगा सकते हैं, लेकिन आम इंसान थोड़ी लगा सकता है. I have a newborn baby also, जिसको मुझे मजबूरन यहाँ से बाहर अपनी नानी के यहाँ भेजना पड़ा है सिर्फ इस कारण से, इस pollution की वजह से. Vimlendu, is air pollution going to be an issue this time? Ideally it should be, but it is actually not. Imagine this morning air quality index, AQI, was around 350, and there's nothing, there's no conversation around air that's been done either by BJP or by Aam Aadmi Party, and of course Congress is not, doesn't even look as if it's actually contesting. Ideally, such a public health issue, air pollution that we've been discussing throughout the year, should have been on top of their agenda. But it, unfortunately, it is not. As in, there is a push from the populace. There, you know, we're talking about what, as in 80 people dying every day in Delhi because of air pollution. That's the biggest crisis that Delhi actually has today vis-a-vis governance. The issue that actually is faced. Bijli, we are talking about Pani, they're talking about schools, but they're not talking about air pollution because they've not done anything about it. Absolutely, as in be the central government or the state government. Particulate matter is the most critical pollutant when it comes to impacting human lives. So PM10 is particles with size less than 10 micron, and PM2.5 is particles with size less than 2.5 micron. So PM10 will have PM2.5 in it. The difference is in terms of what impact it has. When it is 2.5 micron and below, it is such a minute particle that it is likely to get into your skin, into your lung, everywhere. So therefore the toxicity of PM2.5 is considered very high. Agricultural burning, household burning, industrial emissions, vehicular emissions, and construction dust are the main sources that form particulate matter and stay in the air that we breathe. Depending on the time of the year, over 10 million vehicles on Delhi's roads can contribute to 40 to 80% of the region's total pollution. In November 2019, Delhi's air was severely polluted. The pollution monitoring devices exhausted the number of digits they supported. The city had turned into a gas chamber, and as a hurried measure, the Delhi government decided to ration traffic in the city. On odd days, cars ending with odd numbers were allowed, and on even dates, cars ending with even numbers were allowed to be on Delhi roads. As the election for Delhi Assembly neared, smog towers started coming up in the city. Putting air purifiers outdoors is a total waste
of public money. It has not worked in any country in the world, and if India was to try it and waste its money, it will be a colossal waste of precious public money. I'm absolutely not surprised that over the last few years, despite all the action that you see from the government and Supreme Court, our load has not reduced and therefore our concentration has not reduced. Air pollution impacts and adversely affects everyone who's breathing. The only way you can escape the ill effects of air pollution is if you stop breathing. So if you look at the landfills right now, almost 10,000 metric tons of garbage is what Delhi generates every year. Every time you ask the city government, they say it's the responsibility of the municipality. So this whole MCD. Correct. So if you look at on all these issues that affects Delhi's environment, be it groundwater, be it the landfill, be it the air quality, all of it, rather than taking ownership and saying that, oh well, this is in my sphere of influence or action, I should be taking care of that. Everyone keeps blaming each other. Right now, imagine the waste. Like we actually have, we talk about the capital of India, where the landfill is taller than Taj Mahal. If the stunning ruins of Delhi and its placid lakes are a reality, then so is this rancid mountain of filth, the Ghazipur garbage landfill, one of the many that dot the city. यहाँ रहते हुए 44 साल हो गए। सन 76 से ही रह रहे हैं। सन 76 में हमें बसाया था इमरजेंसी के टाइम, जो दिल्ली से अंदर से डेरिया निकाल के फिर यहाँ डेयरी फार्म बनाया था। उस टाइम से यहाँ रहना, उस टाइम पे यहाँ सब जंगल होता था और जो एक खत्ता है ना, हमारे भैंस जानवरों का चराया घर होता था। ये हमारा तालाब था, इधर चराया घर थे सारे। हम तो ये चाहते हैं कि भाई हमारे लिए तो ये पहाड़ खड़ा कर दिया, इसको ख़त्म कर दिया जाओ। और ये बम का गोला है, पहले फटा था, काफ़ी लोग मरे थे। आपके सामने कितने ये क्या बोलते हैं इनको, चीले वगैरह, ये मांस के टुकड़े ले जाते हैं, घरों में डाल देते हैं ऊपर से, और कितने ही लोग परेशान हैं इनसे बहुत ज़्यादा। ये डंपिंग तो कितने ही लोग आए, बोले नेता भी, वो जैसे अभी वो आए थे हमारे MP साहब, क्या नाम है, गंभीर जी, गौतम गंभीर जी, उन्होंने भी बोला ये उठेगा, ये करेंगे, वो करेंगे, बट अभी कुछ नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा खतरनाक जो हानिकारक है ना, वो ये प्लांट है जो इसके जस्ट बगल में जो किचन वेस्ट का चल रहा है ना, वो बहुत ख़तरनाक है। उसमें क्या है, पशु हैं, कुत्ते बिल्ली वगैरह सब जलते हैं उसमें जला करके बिजली बनाते हैं ये। आप बगल में जाओ, वहाँ कॉलोनी है, वहाँ पे जाके देखो कितनी गंदगी कितनी बीमारियाँ हैं, कैंसर के कई पेशेंट ऑलरेडी, कईयों की डेथ हो चुकी है। दिल्ली अंदर तो और भी अच्छी है, खूबसूरत है, राजधानी है, लेकिन ये जहाँ हम रहते हैं, ये क्या दिल्ली है? ये दिल्ली है? ये तो गाँवों से भी बेकार है। 15 साल से सुनते आ रहे हैं कि हटेगा, अभी हमें तो कुछ लग नहीं रहा हटेगा। सांस की बीमारी है, जानवरों को दुख तकलीफ है, बीमारी है, पानी की भी परेशानी है, पानी भी खारा हो गया, पहले मीठा पानी था। सब आते हैं, सब अपने अपने कह के चले जाते हैं, कोई नहीं सुनता। जब चुनाव आते हैं, जब आते हैं, बस उसके बाद में कोई नहीं आता है यहाँ देखने, किसी चीज को नहीं आता देखने। Ghazipur, its black kites circling over, to draw a cliched parallel much like politicians feeding off the people and then taking flight only to come back 5 years later. I think I've always, from day one, I said that my topmost priority is to find a solution for Ghazipur landfill. I'm not saying how long is it going to take, but yes, the pilot project has just started. As Delhi prepares to vote, air pollution seems to have fallen off the margins of poll campaign debates, with residents left to deal with its adverse health impacts. I'm realizing that I'm seeing more and more non-smokers coming with lung cancer, and I fear that coming years are going to see an epidemic of lung cancer and lung diseases in India at younger and younger age. You know, children are like buds. Just as buds blossom into beautiful flowers, the children also, if allowed to grow, will develop into healthy adults. But if you poison your buds, they will never develop into healthy adults. And today, we are poisoning our buds. The country celebrated the Festival of Lights, Diwali, on 27th October 2019. There were strict restrictions to cracker bursting in the national capital region because the already choked lungs of the region couldn't tolerate any added smoke.
But a week later, it collapsed in the dark grey air. This time, the farmers were to blame. Farm fields in Haryana and Punjab were being made ready for winter wheat cultivation. So the stubble needed to be burnt to prepare the field. The smoke blew into Delhi, choking it to a standstill. Schools were shut down. A public health emergency was declared. 23 million tons of paddy residue is burnt every year in 3 states, Punjab, Haryana and UP, shooting up the levels of carbon dioxide by 70%, carbon monoxide by 7% and nitrogen dioxide by 2.1%. Due to this, the deaths of 66,200 were attributed to exposure to PM 2.5 from open burning in 2015, of which 50,500 were in rural areas and the remaining 15,700 in the urban areas. This 65-year-old farmer in Mohali was trying to clear his field by burning farm waste in those grey days of early November, when India Today crew reached the hinterlands. Requesting anonymity, the old farmhands tells us a complex tale of debt and over-mechanization of farming in Punjab. A trend that's repeated across the state, curiously leading up to a spike in air pollution. 4 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਸਰੂਗਾ? ਹਾਂ ਜੀ, 1000 ਘਰ ਆ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ, ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਸਾਡੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਹੋਰ ਦੁਸਹਿਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਧੂਆ ਹੁੰਦਾ। ਢਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਧੂਆ ਹੁੰਦਾ। ਦੀਵਾਲੀ ਪੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਇਕੱਲਾ ਧੂਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਹੱਲ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਇਹਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਸਾਡਾ ਬਾਣ ਪੱਧਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਆਪਦਾ ਬੀਜ ਲਈਏ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ, ਆਏ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਔਖਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੜੂ। Reports say that the number of stubble burning cases in Punjab in 2019 rose by 25%, which means the claims made by the Punjab government to stop farmers from burning farm waste were not true. Introduced in Punjab in 2018, a super seeder machine helps plough the standing paddy stubble in soil and sow the wheat seed simultaneously in a single operation. This, the government asserts, can help end pollution due to stubble burning. The government has arranged for subsidy for machines including happy seeders and rotavators to farmers. But despite the subsidy, some farmers who are unable to afford the seeder machines continue to burn stubble, and the pollution in Delhi fails to reduce during the October-November period. अगर काट के या वो जो सीडर मशीन होता है उससे कुछ नहीं होता? नहीं होता जी, सीडर मशीन चलती नहीं जी, कीड़ा लग जाता है। अच्छा। हाँ जी, ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਣਕ ਉਤਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। 42 ਮਣ ਕਣਕ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਕਿੱਥੇ 55 ਮਣ ਕਣਕ ਹੋਣੀ ਸੀ। 10 ਲੱਖ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆਉਣਾ ਪਊ, 2 ਲੱਖ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਿਆਉਣੀ ਪਊ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇ ਫ੍ਰੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢੀਏ ਇਹਦਾ ਕੋਈ। ਹੁਣ 10 ਲੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ? This stubble burning issue will continue. You cannot stop farmer by coercive action, like you're putting them behind bars, you're fining them. They are not going to pay fines, and even how many farmers you are going to put behind bars? Okay, so I think our whole idea of policy making is top down. One fine day government decides, give you happy seeder, give you 2,000 rupees, and the problem will be solved. I'm sorry, the problem will not get solved. It has to be a bottom-up solution, and this solution will also vary from district to district. Today, the farmer gets just about a 20-day period between the two crops, and they say only machines can clear and prepare the land fast enough. But in reality, there aren't enough machines in the state to clear even 1/3 of the total area under paddy crop, thus reverting to torching the land. Experts believe Delhi's geography is also to blame for the toxic levels of pollution. Actually, the geography of Indo-Gangetic plain is such. See, Himalaya is a boon to us because it traps moisture and we get monsoon. So in one hand,
it is a boon. But it also traps pollutants. So the geography of Indo-Gangetic Plain is such that the pollutants are not able to disperse beyond Himalaya, and therefore they remain here. When there is wind from west or east, the pollution gets moved either through western Punjab and to Balochistan and that side, or towards eastern India and Bay of Bengal. While the air Delhi breathes is toxic, the water it drinks is not in a good state either. Yamuna, a river, a deity, is now a gutter. दिल्ली को चमकाना चाहता हूँ, यमुना को साफ करना चाहता हूँ, ये मेरी एम्बिशन है। जमुना जी का जल तो स्वच्छ करना दूर रहा, गंदा पानी पिलाने का काम ये आप पार्टी की सरकार ने। This river is used to being used as political fodder, used to being an evergreen election issue, used to being the symbol of deity, but used to now being more than a glorified gutter. Talked about almost, 3,000 million liters of wastewater that enters Yamuna every day, and this is toxic black water that enters Yamuna every day, and there's nothing that's actually being done about it. And then there are those who know it best. आंटी कब से रह रहे हो यहाँ पर, यमुना के बिल्कुल तट पर? देखिए यमुना के तट पर मेरा 1937 के बाद नक्शे बने हुए, ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी पहले के उन लोगों के अप्रूव नक्शे हैं हमारे पास, और कम से हमारे 5-6 पीढ़ियाँ हमारी। कभी हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि राजघाट पर यमुना बहती थी, उस टाइम भी हम लोग रहते थे, यमुना किनारे घाट, तो उस टाइम भी हम लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। तो तकरीबन 150-200 साल। तो यमुना का कैसा रूप देखा है आपने जब आप बच्चे थे और अभी इतने साल गुजरे हैं? देखिए इस टाइम में 65 ईयर्स की हूँ, हम लोग यहीं पैदा हुए, इसी यमुना में हम लोग नहाते थे, खेलते थे। इस यमुना का ऐसा रूप था, बताया ना कि हम लोग यहाँ पर पहले नलों का कोई पानी नहीं था, उसने नहीं थी, हम लोग इसी में खाना बनाया जाता था हमारे। इतना सुंदर पानी था इसका कि हाथ डालो तो रेती नज़र आती थी। आज भी यमुना का रूप देख रहे हैं कि हम लोग औरों को क्या कहें, आने वालों को, हम लोग ही यहाँ नहीं नहाते, हम लोग इस पर खड़े होते तो मुँह पर कपड़ा लगा कर खड़े होते हैं। आज ये भी रूप देख रहे हैं हम लोग। इससे हर पार्टी आती है, हर पार्टी ये कहती है कि हम लोग, अब केजरीवाल जी भी कह रहे हैं कि हम लोग करके दिखाएंगे 5 में 10 साल। हमें विश्वास नहीं होता, किसी कोई पार्टी यमुना साफ नहीं कर सकती, इसमें चाहे कोई भी। हमें इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। जो रूप हमने देखा तो वो शायद जिंदगी में अब कभी मिलेगा ही नहीं। क्या काम करते हैं? मैं स्विमिंग सिखाता हूँ बच्चों को। जमुना जी में स्विमिंग कर सकते हैं अभी अगर पानी देखें तो? नहीं, अभी तो नहीं कर सकते। कब से छोड़ दिया यहाँ पे स्विमिंग सिखाना? यहाँ तो जैसे बाढ़ आती है ना, हाँ। पानी आ जाता है ज़्यादा, तो कुछ साफ हो जाता है, हाँ। तो उस टाइम हम बच्चों को सिखाते हैं यहाँ पे। नहीं तो कितना गंदा पानी है? अभी तो बहुत गंदा है पानी। ये नाले का पारा, पूरी दिल्ली का नाले का पानी आ रहा है। यही जानवर जो होते हैं, गाय वगैरह जो मर जाते हैं, शव है किसी जानवर। I lost my camera person Mohsin to this. The crow is actually feeding on a carcass. तो किसी टाइम में जब हम छोटे थे, रेता निकाल के हम लोग बीच में जाके रेता निकाल के फिर कोलगेट करते थे उससे। लगता है कभी साफ होगा? नहीं, ऐसा तो अब लगता नहीं, उम्मीद नहीं है ऐसे। तो किसी नेता पे विश्वास नहीं? कुछ नहीं, किसी पे कोई विश्वास नहीं। हमें तो रोना आता है बल्कि यहाँ बैठ के कि क्या हालत थी और आज क्या हालत है। एक चीज़ तो है कि मैं आपके साथ में खड़ी हो रही हूँ, हम कैमरे में बता नहीं सकते, पर स्मेल। मैम अगर आप ये गर्मी में आओगे ना तो आप यहाँ खड़े नहीं रह सकते, इस सीढ़ी के ऊपर आप खड़े ही नहीं रह सकते। स्मेल इतना होता है? बहुत भयंकर। लगता है कभी यमुना साफ होगी दिल्ली में? मोदी सर कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है चारों तरफ से जो बुराई रूपी कौवे होते हैं वो घेर लेते हैं, तो वही है उनके साथ भी हो रहा है। We controlled a large number of factors and achieved improvement in our survival, but today that may get counteracted by these newfound lifestyle diseases, air pollution being one of them, which have now started adversely impacting the survival, and the effect of this we'll see
in the next 10 or 20 years. Imagine Stanford, California, several other cities actually shut down where air quality index is 200. And for us, life is normal on a day when air quality index is beyond 900. And there's just blamery around between centre and state, and Kejriwal blaming Punjab government and Haryana government, central government actually blaming the state government. We are all fed up. Governments came, promised to reduce the poison the city breathes, drinks and lives in, and went by. But on the ground, its millions of citizens continue to suffer, and thousands flock in every day to call the city their home. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.